Hi everyone, welcome back to our channel. So this is Asim here, and I'm quite happy for a few things today. First thing, the AppCon went like quite good. So it was a quite good response. So if you haven't checked that, so check the speaker, like the first day of AppCon conference. Today is the second day, and a lot of good speakers, a lot of good talks has been going on. Second thing, the SQLMap website. So I was looking for a website where I could show you all the exploits and all the SQL injection techniques that are mentioned here. So I found this website. Like it was on Over the Wire, and Over the Wire is something that I have been using. Like I have been practicing on earlier as well. In my college, I have also suggested to my juniors as well. So this is the actual War Games website. So War Games is basically like practice websites where you could practice the cybersecurity things. So two of these I remember, the Bandit and Natas. So yeah, Bandit में Linux के things होते, like you practice about Linux stuff, maybe commands और वो सब चीजें. SSH, learning it through SSH and then working on that. So you build your Linux skills in Bandit. Natas में web पे focus है, like you do web exploitation or some similar kind of stuff. And then this red tiger.labs, it's not mentioned here, but I just found Google करके मुझे मिल गया. I found it through Google there. So and yeah, also SQLMap was running fine here. I checked that, and even the manual part, like all the things that were mentioned here. So this particular exploit.db paper and this SQL injection is the second part of the like previous one. So if you haven't checked that previous version, go check that out. It's on this channel. And उसमें मैंने manual SQL injection दिखाया था, and which is very close to my heart because that was the first thing that I learned in web app securities. So yeah, so here I would show you SQLMap and how powerful this tool is, and it's like it does everything and a lot of things that I don't think manually a lot of people would be able to do, but it does all that. So वो भी होगा. Third thing, and that is quite a happy I am about. So OmniSec app, so it has finally launched, and there बहुत सारे issues आ रहे थे, and I was quite involved in the past like 1 month, 1.5 months with this. So that's why videos भी थोड़े सही नहीं चल रहे थे. And मेरा लैपटॉप भी क्रैश कर रहा है पिछले एक वीक से, and that's why you might have seen कि वो जो स्ट्रीम था and ये आईफोन का वीडियो था वो भी मैं दूसरे लैपटॉप से बना रहा था. ये अभी इंटरमिटेंटली चल रहा है, प्रोबेबली एनवीडिया के ड्राइवर्स का कुछ इश्यू था. मैं अभी अपडेट किया हूँ, अपग्रेड किया हूँ, बहुत सारे स्ट्रगल किया हूँ, बट ये अभी चल गया फॉर्चुनेटली. सो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ उस पर, बट लेट्स सी, कुछ इसका परमानेंट फिक्स करना पड़ेगा. या सो कमिंग बैक, सो ये ऐप लाइव है एंड कल मैं एक चेंज पुश किया था. सो वो फीड क्या था, मतलब पहले बहुत अच्छा नहीं था बिकॉज लाइक व्हेन यू स्क्रॉल डाउन वो ऑटोमेटिकली ऊपर आता था एंड लोड करता था. सो लाइक नॉन इंट्यूटिव. तो मैं भाई इसको यूज़ कर रहा था, वो बोले यार काफ़ी सही नहीं लग रहा है इसको. एंड देन फिर मैं इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग डाल दिया कि तुम स्क्रॉल करते जाओ, नीचे नीचे फीड आते जाएंगे. सो या, सो अभी ये रियल टाइम में फीड्स कलेक्ट करता है. एंड if you could see that there are a lot of tags here. So inside, so हर एक जो tweets होते हैं, bug bounty tips जो होती हैं, उन सबको tagged है. And ये these are the lot of tags that we have, like around 50-60 tags हैं. And on the basis of like अगर तुमको brute force के tips चाहिए तो तुम brute force को select करो and then search कर लो. So that is one of the features here. Because if data is not tagged, you cannot like search through it. So that is the main part that like we are trying to solve कि एक जगह कलेक्ट करो. एंड यार लार्जर एम है इस ऐप का कि इसमें ट्यूटोरियल्स भी डालने हैं एंड लाइक पीपल साइबर सिक्योरिटी के लिए एक जगह है, लाइक देयर इज नो वन प्लेस. आई थिंक बहुत सारे वेब एप्स हैं जो सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड उन सब पे हैं. आई एम नॉट श्योर कितने स्ट्रक्चर्ड है वो, बट आई हैव सीन अ फ्यू, बट आई थिंक लाइक ये थोड़ा बेटर है उनसे. सो या, इफ यू हैवंट चेक दिस आउट, गो टू चेक दिस आउट. सिक्योरिटी न्यूज़ लेटेस्ट रहती है, बहुत सारे फीड्स हैं उनसे कलेक्ट होके वो आते रहता है उस पर. सो मे बी अभी तुमको न्यूज़ दिख रहा हो, फिर थोड़े बाद फिर फीड अपडेट हो जाएगी. सो या, यू कुड डू दिस. सो आई डिडंट सी दिस. सो कुछ लोग यहाँ पे इस पे रिव्यूज लिखे, थैंक्स अ लॉट पीपल. एंड इफ यू कुड सी दैट चेंज द फीड टू इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग 1.0.8, 10 people. So ये 33 MB इंस्टॉल साइज है, बट एक्चुअल डाउनलोड साइज आई थिंक 18 MB है. सो ये मैं लैपटॉप पे खोलूँ इसलिए ऐसा दिख रहा है,
बट इफ यू ओपन इट ऑन फोन 18 MB का डाउनलोड साइज है एंड एक्सपैंड होकर आई थिंक 33 MB पे आता है. Enough promotion, I think. Let's come back to this. So in this video, I would show you how you could set up SQLMap. So watch till the end. पूरा हम लोग बेसिक से जाएंगे. कुछ मैनुअल पार्ट जो मैं लास्ट टाइम दिखाना चाह रहा था प्रीवियस वीडियो में, लाइक वर्जन और डेटाबेस, तो मैं पहले मैनुअली करके दिखाऊंगा इस वेबसाइट पे, एंड देन उसी को मैं SQLMap से दिखाऊंगा कितना इजीली हो जाता है. इंडिया SQLMap बहुत पावरफुल टूल है. देयर इज नो iota of doubt about it. लॉट ऑफ अटैक्स यार मेरे से नहीं होगा मैनुअली. आई कैन नॉट डू दिस, बट ये हैंडल कर लेता है. लाइक स्ट्रिंग इंपोर्ट कर देना, जैसे कभी कभी होता है कि फायरवॉल नॉर्मल स्ट्रिंग्स को चेक कर ले रहा है एंड इट्स ब्लॉकिंग दैट. बट इसमें क्या होता है कि ये तुम टैम्पर टू इनकोड, बहुत से प्लगइन्स हैं, सो वो उसको इनकोड कर देगा, बेसिक्स को इनकोड या डबल इनकोडिंग करके भेजेगा सो दैट उसको बाईपास कर जाए. सो यू हैव टू बी अ प्रो इन यूजिंग दीज. सो इट हैज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. आई वुड एक्सप्लोर सम ऑफ दोस टुडे. कुछ मैं बता दूंगा, बट आई थिंक यू वुड हैव टू सिट डाउन फॉर एन आवर टुडे एंड गो थ्रू दीज क्या क्या ऑप्शंस हैं. एंड इसी वेबसाइट पे या दूसरे वेबसाइट पे प्रैक्टिस कर सकते हो. बीवैप है और भी बहुत सारे हैं. SQL OWASP का एक टेस्टिंग वाला, उसको सेटअप कर लो लोकल सेटअप करोगे, यू वुड लर्न अ फ्यू मोर थिंग्स एज वेल. And if you are on like Linux, I think like if you are into hacking, you want to learn something, actually I think you should switch on to Linux. Ubuntu से स्टार्ट कर लो. Ubuntu would be sufficient. मैं खुद काली यूज़ किया हूँ 4 साल कॉलेज में, बट आई थिंक काली वाज ओवरकिल. मैं इतना ज़्यादा टूल्स यूज़ नहीं करता था. मेटास्प्लॉइट में Ubuntu में भी डाल लिया एंड बाकी चीज़ें स्टेबिलिटी वाइज दोनों सही हैं, बट यार Ubuntu इज लॉट लेसर देन काली में बहुत सारी चीज़ें हैं. सो आइदर वे यू आर गुड विथ इट, जो भी यूज़ कर लो. सो SQLMap पे जाओ, यहाँ पे डाउनलोड साइट ये पे क्लिक करो डाउनलोड, एंड ये डाउनलोड लिंक जब आता है, तो मैं यहाँ से लिंक कॉपी करने के लिए ऐसे कॉपी कर लेता हूँ. कॉपी डाउनलोड लिंक तो स्टॉप कर देता हूँ बिकॉज आई ऑलरेडी डाउनलोडेड. ये मेरा सर्वर है, सो मैं wget कर रहा हूँ. एंड ये देखो मैं यहाँ पे tar zip यूज़ किया हूँ. यू कैन यूज़ zip फाइल ऑल्सो. सो zip फाइल में कमांड थोड़ा चेंज हो जाएगा. लाइक अगर तुम विंडोज पे हो तो राइट क्लिक करके अनजिप कर सकते हो, एंड और अगर तुम लिनक्स पे हो, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टाइप अनजिप मास्टर. सो यू कुड सी कि मास्टर नाम से सेविंग टू मास्टर, तो मास्टर नाम से फाइल सेव हुआ है, नॉट लाइक legacy.tar.gz, उससे नहीं सेव हुआ है. सो अगर legacy.zip है, सो अगर zip वाला किया तो अनजिप यूज करना. अदरवाइज यहाँ पे यूज करो tar-xvzf. Sorry, X for extract, V for verbose, Z I don't remember exactly, F forcefully I think. So you could see ये extract कर दिया SQLMap नाम से. SQLMap, yeah. So मैं इसमें CD कर देता हूँ. इसमें कुछ इंस्टॉल नहीं करना, सिर्फ Python. Sorry, let me show you पहले क्या क्या यहाँ पे. So यहाँ पे देख रहे होगे Python की फाइल्स हैं एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एंड ऑल दैट. तो Python SQLMap.py. सो बस इतना रन कर दोगे तो वो एक बेसिक आउटपुट हेल्प वाला दिखा देगा. मिसिंग अ मैंडेटरी ऑप्शन -h डाल देते हैं फॉर हेल्प. यूजुअली -h होता है. -hh डालोगे तो यू कैन सी बहुत डिटेल्स ऑप्शंस आ जाएंगे. लाइक लेट मी शो यू. तो -hh काफ़ी डिटेल में आ जाएगा ऑप्शन. आई थिंक -h वुड डू, अभी के लिए काफ़ी है. सो या दीज ऑप्शंस. सो -u डालना पड़ेगा जिस URL पे तुम टारगेट करना चाहते हो. इफ यू वांट कि गूगल डॉक्स यूज करके वो ऑटोमेटिकली फिगर आउट करे वेबसाइट्स, लाइक जैसे पिछले वीडियो में बताया था मैं कि हाउ यू कुड मेक अ गूगल डॉक फॉर फाइंडिंग SQL vulnerable websites, SQL injection vulnerable websites. सो ग्रामेटिकली करेक्ट हो रहा हूँ. सो या डेटा स्ट्रिंग. सो ये बहुत सारे ऑप्शन है, सारे एक वीडियो में एक्सप्लोर करना पॉसिबल नहीं है. थ्रू द कोर्स ऑफ दीज वीडियोस आई थिंक मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा. प्रोबेबली पोर्ट्सफिगर के लैब्स यूज करके वहाँ पे एक एक अलग अलग अटैक में इसके अलग अलग टूल्स को यूज करके दिखा सकता हूँ. आई वुड थिंक कैसे कर सकते हैं उसको. अभी के लिए इस वेबसाइट पे फोकस करते हैं एंड SQLMap का यूजेज कैसे होगा वो देखते हैं. ये ट्यूटोरियल पेपर है एंड ये बहुत अच्छा है. आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू रीड दिस.
एंड इसी को फॉलो करके लास्ट टाइम वी डिड द एक्सपर्ट एंड ऑल थिंग्स. सो दैट वाज हैक दिस साइट एंड वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव था, लाइक एक पर्टिकुलर तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो. यू कैन नॉट लाइक ऑल डम द डेटाबेस और सॉरी यू कैन नॉट डम द डेटाबेस और वर्जन और वो सब चीज़ें नहीं कर सकते हो. So since you cannot do that, I had to figure out another website. And moreover, because SQLMap testing करता है, so it sends a lot of requests. And hack this site, I think थोड़ा flaky है. अगर बहुत ज़्यादा request जाते हैं तो वो या तो block कर देता है या तो खुद unstable हो जाता है. Either way वो accessible नहीं रहता है. So that's why I preferred like finding another website. So ये actual like अगर यहाँ पे आओगे तो ये URL सारे description में होंगे. So all these would be in the description. तो रेड टैगर्स हैक किट है, ये पढ़ सकते हो. यहाँ पे अलग अलग लेवल्स है, तो वो ट्राई की अलग अलग पे वीडियोस बनाओ. तो लेट्स स्टार्ट हियर. सो ये स्टार्टिंग वाला पेज है एंड यू कम टू दिस पेज. लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल इंजेक्शन. टारगेट है गेट द लॉगिन फॉर यूजर और नॉट से. हिंट, डू यू रियली नीड वन? नहीं. लेवल 1 यूजर्स, कैटेगरी 1. अगर इफ यू क्लिक ऑन दिस, सो कैट इक्वल टू 1, दिस हैक इज हिट कूल एंड कुछ डेटा आ रहा है, राइट. तो हम लोग वापस इसी पे आते हैं. सो इसमें पहले हम लोग ऑर्डर बाई करके फिगर आउट करते हैं. तो मैं अभी थोड़ा फास्ट जाऊंगा बिकॉज लास्ट टाइम पिछले वीडियो में सारी चीज़ें डिस्क्राइब हो चुकी है. तो यहाँ पे इसको चेंज करते हैं. ये हैक.बार है, इसके बारे में भी डिस्कशन हो चुका है. तो ऑर्डर बाई मुझे पता है यहाँ पे 5 कॉलम्स हैं, बट जस्ट टू शो यू मैं एक बार 5 पे दिखा, सॉरी 4 है. तो देखो 4 पे नहीं आ रहा है, बट लेट मी, सॉरी 5 पे नहीं आ रहा है. So let me show you कि ये 4 पे सही चलेगा. Order by 4 hyphen. So you could see this is coming. So we have identified कि there are 4 columns there. So now let's do this. Let's dump कि actual में किस column से data यहाँ पे आ रहा है, and based on that हम लोग उस column के parameter को change करके कुछ अपना SQL query वहाँ पे execute कर देंगे, so that we could get the database from there. So let's run this. So 3 और 4 हैं जो vulnerable हैं, right? तो अगर 3 में मैं वर्जन डालता हूँ, 4 में डेटाबेस, तो ये 2 फंक्शंस हैं जो फिगर आउट करते हैं. एट द रेट वर्जन फिगर आउट करता है कि डीबी का कौन सा वर्जन चल रहा है, एंड एट द रेट डेटाबेस, ये डेटाबेस का वो प्रिंट कर रहा है. तो यहाँ पे 5.5.62 और ये पर्टिकुलर टैग है. अब हम लोग इसी को SQLMap से ऑटोमेट करते हैं, एंड वी वुड ऑल्सो ट्राई टू गेट द करंट यूजर, और बहुत सारे ऑप्शन हम सबको फिगर आउट करेंगे, सॉरी हम सबको टेस्ट करेंगे. So let me show you यहाँ. तो यहाँ Python SQLMap.py -u URL डालने के लिए. एंड अगर if you are using ZSH, so you could see ये बैकस्लैश by default डाल दिया. तो ये रिमूव कर देना, बिकॉज बैकस्लैश वो बेसिकली escape करने के लिए डालता है, एंड मैं क्योंकि यहाँ पे डबल कोट्स में डाल दिया, सो उसका यूज नहीं है. So let's do this. So there's an option also here जो threads का होता है. तो अगर ज़्यादा thread से चलाओगे तो फास्ट होगा, but that also means कि you're sending more requests. So if it's before a firewall or something, so block होने लगेगा. So it looks like the backend database is MySQL. Do you want to skip test payload specific for other databases? So by default यहाँ पे yes कर देना चाहिए, because तुमको पता चल गया अगर MySQL है, so why would you try to test for other databases, right? So मैं yes कर देता हूँ. But if you are not getting, like if you are trying to do this for some other website and वहाँ पे नहीं मिला, like you have done yes and later on test में false आया, so it could be कि ये false positive था, MySQL नहीं था, and you wouldn't want कि बाकी test ना चले. So let me explain it. So अगर MySQL का database मान के यहाँ पे चल रहा है and उसी की सिर्फ test run होगा, but later on पता चलता है कि नहीं यार कोई भी test positive नहीं है. So just to confirm कि हो सकता है कहीं MySQL वाला false positive तो नहीं था, तो यहाँ पे तब no कर देना and try to run test for all the databases and all those things. For the remaining task, do you want to include all tests for MySQL extending provided level? अब मुझे पता है यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, so मैं यहाँ n कर दूंगा. But if you're testing in or maybe like कोई वेबसाइट है जो आपका टारगेट है, so you might want yes. So ये कुछ टेस्ट केसेस. सो ये करता गया कि ये इट सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू दैट वेबसाइट और इस पर्टिकुलर वर्जन्स के लिए क्वेरी करके, लाइक यहाँ पे अगर देखोगे, सो एंड बेस्ड एंड एरर बेस्ड क्वेरी है. देन देयर इज टाइम बेस्ड, एंड देन देयर इज व्हाट इट इज generic union query. So like the thing that we did here was generic union query. So if you go to this union all select, right? So this was the generic union query. So you could see all the requests that they have sent.
तो अगर कभी ऐसा होता है तुम मैनुअली नहीं कर पा रहे हो बट एसक्यूएल मैप कर ले रहे हैं, देन यू कुड आल्सो सी कि क्या पेलोड भेजा गया था एंड यू कुड आल्सो मैनुअली सेंड दैट. So now it shows get parameter cat is vulnerable. Do you want to keep testing others if any? तो अगर यहाँ पे मान लो suppose cat equal to 1 और अगर ऐसे रहता है यहाँ पे like and say product equal to 2 1 कुछ भी and test और let's say feedback id equal to 12 ऐसा कुछ होता तो ये एक एक करके बाकी पैरामीटर्स को भी चेक करता. आई थिंक एक भी वल्नरेबल है दैट्स एनफ, बट समटाइम्स इट हैपेंस कि जो मतलब एक पैरामीटर वल्नरेबल हो बट सेकंड वाला जो वल्नरेबल हो वो ज़्यादा डेटा लीक कर रहा हो. लाइक लेट मी एक्सप्लेन क्या है. सो जैसे कैटेगरी 1 से डेटा ये वाला डेटा आ रहा है यहाँ पे, बट देयर कुड बी लाइक अदर पैरामीटर लाइक सपोज फीडबैक पैरामीटर जिससे ये पूरा डेटा आ रहा हो. सो अगर फ्रंट एंड पे जो डिस्प्ले हो रहा है वो कैरेक्टर लिमिट कर रहा है तो फीडबैक वाले पैरामीटर से अगर इसका इंजेक्शन होगा तो हम लोग ज़्यादा डेटा फिगर आउट कर पाएंगे कंपेयर टू कैट वाले से, राइट. सो यू गेट द पॉइंट. लाइक इफ कैटेगरी 1 इज एंड फीड देयर इज अ पैरामीटर फीडबैक and if we are able to print more data out of feedback, so we would try to explore the feedback one so that we could get more data at once. That's not a limitation, but I would suggest like check for other parameters as well. Since there are no other parameters, I would do no. I don't want to keep testing for other parameters. So you could see what it has figured out, that there are 3 types of SQL injection that they have tried. Boolean based blind, जिसमें पेलोड था cat equal to 1 and 6807 equal to 6807. So what it would have done is एक 6807 equal to 6806 किया होगा. So that would mean category 1 and false. And because that was false तो कुछ भी render नहीं हो रहा होगा. So let me show you क्या होगा. अगर यहाँ पे आते हैं and यहाँ से करते हैं, यहाँ से easy होता है करना. So this should work fine because and के बाद ये true है 6807 equal to 6807. But अगर मैं 6806 कर दूँ मैं तो ये नहीं होना चाहिए print. Okay, see, and false. So basically यही वो try किया. Then you could do the same for this. ये कुछ देर के लिए sleep कर देगा. And same for this. So ये यहाँ पे random strings किया है because ये अब test कैसे करता है. Like you are visually you could see कि 3 और 4 print हो गया. बट 3 और 4 पेज में कहीं और प्रिंट भी हो सकता है. सो ये ऐसा रैंडम स्ट्रिंग्स प्रिंट करता है एंड चेक्स द आउटपुट. सो द रिस्पॉन्स जो वहाँ से आता है उसमें चेक करता है कि रैंडम स्ट्रिंग्स है या नहीं. अगर ये है सो प्रोबेबली सक्सेसफुल एसक्यूएल इंजेक्शन हुआ था उसमें. सो नाउ दैट वी हैव फिगर्ड आउट कि ये पैरामीटर है, लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन डू. -h ऑप्शन करते हैं. तो -a रिट्रीव्स एवरीथिंग. लेट्स स्टार्ट विद करंट यूजर. सो what you have to do is इसके बाद -hyphen current user मतलब वो ऑप्शन कॉपी पेस्ट कर दो. So current user is HACR at localhost. Also let's check for current DB. So we also figured out manually कि current DB HACR है, right? So do this current DB HACR, current database HACR, and if you go to this and sorry, yeah, union. So what we did here was let me decode this first. So here we added like database. So once we run this, we could see that यहाँ पे database HACR आता है, right? So our aim for this is table name label level 1 underscore users, and we need to figure out the login for Hornox. So let's see -t. So we could dbms database to enumerate database, dump all सारे dump कर सकते हैं, enumerate database tables. So ये करते हैं. So इसको use कैसे करते हैं? So like current db we have figured out. So यहाँ पे पास कर देंगे HACR. तो ये डेटाबेस. सो इट कुड बी कि यहाँ पे मल्टीपल डेटाबेसेस चल रहे हो. तो हम लोग -d करके HACR डेटाबेस दे दिए एंड हम लोग को सारे टेबल्स फिगर आउट करने हैं उससे, राइट. फास्टर वे क्योंकि हम लोग को यहाँ पे पता है टेबल्स कौन से, तो हम लोग सीधे फिगर आउट कर सकते हैं. बट आई एम शोइंग यू कि क्या होगा. सो अब अनएबल टू रिट्रीव द टेबल नेम्स फॉर एनी डेटाबेस. अब ऐसा इसीलिए बिकॉज जो MySQL वर्जन चल रहा है वहाँ पे मे बी इन्फॉर्मेशन स्कीमा नहीं हो, पुराना वर्जन हो तो आप ब्रूट फोर्स करना पड़ता है. सो इफ यू गो टू दिस
tables, getting table and column name. If the MySQL version is less than 5, we must guess the column name. और अगर MySQL version greater than 5 रहता तो information schema से you could figure out all the tables. So since ये MySQL version 5.0.12 है, I'm not sure ये क्यों नहीं figure out कर पाया. But either way, there is another like trick under the hood for SQLMap. So इसके पास list of common database table names ये सब है. So ये उसको brute force करेगा. So मैं yes कर दिया हूँ. Default अगर मैं choose करूँगा तो ये इस वाले path से जाके यहाँ से file निकालेगा. Number of threads, let's do it 10 threads so that's how fast हो जाए. So 3415 table names there हैं जिसको एक एक करके try करेगा. So I think I would quit it because the kind of denial of service हो जाएगा इस पे. And since I already know कौन सा date like table name है, like यहाँ पे वो mention कर दिया level 1 user, so I would just try to get the columns for this. So closing this, threads close होने देता है. -t. So -t भी ऊपर एक option था if you didn't read that. Yeah, oh sorry. -dump, I think dump से हो जाएगा. So ये क्या कह रहा है कि hacked database का इस particular table को dump करो. Column existence default कर देते हैं, 10 कर देते हैं. So default number of, so ये ID नाम का column मिल गया इसको, username नाम का column मिल गया, password या वैसा कुछ होगा वो भी मिल जाएगा I think. So that's how we would be solving this. So यहाँ पे कर सकते हम लोग like SQL injection. So H.A.C.R से हम लोग को username password चाहिए, right? So ये test कर रहा है for that. So 21 items. We have a lot of items there. Let's see the SQLMap page तब तक. So features, if you could see, full support for all these number of databases. इसमें तो मुझे database पता भी नहीं, like MySQL पता है, Oracle पता है, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, MemSQL, TIDB, MonetDB. So there are a lot of databases and ये सारे को test कर सकते हैं. इसके पास payloads हैं. So it has payloads for all these databases and could easily test that. What are different techniques जो इसके पास है? Boolean based blind SQL injection, time based blind SQL, error based, union query based, stacked query based and out of band. So a lot of techniques. बहुत सारे तो पता भी नहीं होंगे but ये वो सारे test कर लेगा. So you don't have to worry about that. पासवर्ड रिकॉग्निशन हैश भी करता है. मुझे एक बार जरूरत पड़ी थी. ऑटोमेटिक रिकॉग्नाइज करता है पासवर्ड एंड कुछ कॉमन डिक्शनरी वर्ड्स से उनको क्रैक करने की कोशिश करता है. सो इट डज ऑल दोस थिंग्स ऑटोमेटिकली. डॉक्यूमेंटेशन, यूजर्स मैनुअल है यहाँ पे, डेमो यू कुड सी, यहाँ पासवर्ड हैश, contribute, donate, you could do that. It's a very good project. You could see 18,000 stars. ऐसे ही नहीं होता 18,000 stars. Yeah, it's a very solid and good tool I have. So you could see ID, name and password मिल गया. So I think that's enough for us. Let's close this. So any को dump कर दे, that's enough. So you could see H.A.C.R का ID मिल गया, username and password भी मिल गया. So let's do this. H.A.C.R username and that was easy, password. So that was easy, right? Password will change over time. So you can raise a vchal.net score with this flag. Password for next level is this. So you need this. Hack it. And if you don't know about vchal, so vchal is a like consortium of websites. CTF websites. So यहाँ पे अगर account बनाते हो and you hack on any of these websites, यहाँ पे बहुत सारे websites mentioned है. Like sites पे अगर जाओगे, so for online users, इतने सारे websites हैं. So if you solve challenges on these, so ये सारे CTF, reversing, pawning इन सब के हैं, like wargame.kr, Valhalla, reversing.kr, पे hack this site भी होगा. Hack this site. Okay, maybe आगे pages में हो, 2 पेज हैं. So इन पे अगर तुम solve करते हो problems, so you get some points and you could like vchal एक generic scoreboard है as CTF time में scoreboard for all the CTF events. ये सारे wargame websites के हैं. So these sites are called wargame websites. So wargames are basically hacking websites. So if you go for the second part,
सिंपल लॉगिन बाईपास तो यहाँ पे करना है. So I think SQL के हिसाब से SQL map का demo and automation part is enough for today. We'll continue with these kinds of videos. So hope you enjoyed this, and if you liked it, press the like button, share with other people, subscribe to the channel if you haven't already, and if you like, at least check out the app here. I think you would like it, and we are trying to improve few things. So next update में probably tutorials आ जाएगा and a few other things. And yeah, thanks a lot. Hope you have a nice day.